टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्राइंगल्स में। तो बेसिकली 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, आइसोलेसिस, इक्विलैटरल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइसोलेसिस ट्राइंगल आर दोज ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है। स्केलिन ट्राइंगल वो होती है जिनमें तीनों साइड में से कोई भी इक्वल नहीं होता, दे ऑल 3 आर अनइक्वल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री की एंगल होती है जो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस होती है। तो एज वी ऑल नो डैट कि ट्राइंगल में 3 साइड होती है। तो लेट्स टेक साइड ऑफ ट्राइंगल एंड input enter the value of a. Similarly we will copy this and we will take the variable name here b, enter the value of b here, and again c, enter the value of c. Now we are going to give this program the if-else condition so that we can differentiate between the if a equal to b and a equal to c, then print the triangle is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Similarly, if a equal to b or a equal to c or b equal to c, print the triangle is an isosceles triangle. Else print the triangle is an right angle triangle. Okay, now we are going to save it and we are going to run it. फिर से नहीं चला यार, again run it. Okay, now enter the value of 55, equilateral triangle. Again we are going to run this. 55, 90, isosceles triangle. And 69, 89 and 90, right angle triangle. That's all for today. If a equal to b and a equal to c, then print the triangle is an equilateral triangle. Similarly, if a equal to b or a equal to c or b equal to c, print the triangle is an isosceles triangle. Else print the triangle is an right angle triangle. Okay, now we are going to save it and we are going to run it. फिर से नहीं चला यार, again run it. Okay, now enter the value of 55, equilateral triangle. Again we are going to run this. 55, 90, isosceles triangle. And 69, 89 and 90, right angle triangle. That's all for today. Hit that like button, leave a comment, share this video, and make sure to subscribe.